the name of Almighty Allah, the most gracious, the most merciful, possessor of majesty and reverence. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to share a topic that is nutrition in human beings of standard 10th साइंस सब्जेक्ट. तो आज मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. तो so far as this nutrition in human beings is concerned, you are already aware about the various types of the nutrition which we have already discussed in the previous lectures. तो आज हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में ये न्यूट्रिशन इनमें न्यूट्रिशन कैसे होते हैं. सो फार एज द ह्यूमन बींग्स आर कंसर्न, तो ह्यूमन बींग्स दे आर द हेटेरोट्रॉफ्स एंड दे आर ओमनिवोर्स, एंड बिसाइड्स दे शो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दैट मीन्स दे टेक द फूड substances in their complex forms, and then they involve various steps like ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So now the whole process of this nutrition takes place by means of a system which is called the human digestive system. Human digestive system. Human digestive system, it is that organ system which is concerned with the nutrition in case of the human beings or in case of the man. This human digestive system, it comprises two parts. One is known as the alimentary canal, and second, digestive glands. So this human digestive system, it comprises two parts, that is the alimentary canal and the digestive glands. This alimentary canal, it is a long tube which runs from the mouth up to the anus, and it consists of various organs, and it is having the variable diameters from the mouth up to the anus. तो इसके मुख्तलिफ मतलब जो इसका diameter होता है, that is varying. Somewhere it is wider, somewhere it is narrower, its diameter varies. And it comprises various the organs, that is mouth, buccal cavity, तीसरा इसी तरह pharynx, esophagus, stomach, small intestines and large intestine. So far these digestive glands are concerned, these are five types. One is known salivary glands, दूसरा gastric glands, तीसरा liver, चौथा pancreas, and fifth one, these are the intestinal glands. So broadly we divide the human digestive system into two parts, that is the digestive tract or the alimentary canal and the digestive glands. So let us try to discuss them one by one. The first part, the alimentary canal, that is the mouth. Mouth, it is just like a transverse slit which is bounded by two movable lips, upper lip and lower lip.
The mouth serves the function of ingestion. It is the mouth through which we take the food inside our body. So it serves the function of this ingestion. And this mouth, it is followed by a buccal cavity. This was mouth. It is followed by buccal cavity. B-U-C-C-A-L, buccal cavity. This buccal cavity, it is a large space or cavity which is bounded on its upper side by plate and the lower side by the throat and the sides by the jaws. तो इसके ये एक ऐसी क्लोज स्पेस हो, एक स्पेस है या एक कैविटी हम कहेंगे कि इसका अपर ऊपर इसको रूप पे प्लेट होता है, नीचे थ्रोट होता है और साइड्स पे जॉज होते हैं. तो ये जो ये बकल के इसके जो ये थ्रोट है, थ्रोट के ऊपर फिर इट सपोर्ट्स ए मस्क्यूलर टंग, यहाँ पे टंग होती है. The tongue, it is one of the sense organs in of the body. It acts as the sense of this taste. It senses for the taste, or it is the organ of the taste because it possesses many taste buds which help us to detect the bitter, sweet, salty. And these tastes we can differentiate with the help of this. We can taste them with the help of the tongue. Apart from that, tongue is also important in speech. It also helps us in the chewing of the food because it brings the food under the premolars and the molars that help us in the grinding of the food. तो इसकी बहुत सारी फंक्शंस हैं. यहाँ पे मैंने आपके कुछ फंक्शंस के बारे में बताया इस टंग के बारे में. तो जो इसके फिर जॉज होते हैं, jaws which are just bounding this cavity on its sides. The jaws, they possess the teeth. जो ये teeth होते हैं इंसान मतलब ह्यूमन बींग्स में, these are present within these jaws. जहाँ तक ह्यूमन teeth का ताल्लुक है, they are diphyodont. What is meant by diphyodont? Because they appear in two sets. Initially they appear in the form of temporary teeth, or that is a temporary set or the milk teeth, and then that is replaced by a permanent set. तो जहाँ तक number of teeth का ताल्लुक है, in the milk set there are 20 teeth, but in the permanent set, in case of an adult human being, the number of teeth is 32. And besides these teeth, there are of these heterodont. That means they are different in their size, in their function, in their shapes. तो हम ये कहेंगे इनकी शेप साइज वो भी मुख्तलिफ होते हैं, इनकी फंक्शन भी मुख्तलिफ होती है. तो there are 4 types of teeth in case of the human beings. One is known as the incisors, then canines, then premolars and molars. In case of the milk teeth set, in case of the milk set, तो वहाँ पे और टेम्पररी सेट में कितने होते हैं? 20 टीथ. इनमें वहाँ पे 4 होते हैं दिस incisors and 2 canines and 6 these molars. Sorry, 6 molars. तो इस तरह ये एक हाफ में होता है, एक जॉ में होता है, 2 में ये 20 होते हैं. इसी तरह जो परमानेंट सेट में होते हैं उसके अंदर 32 टीथ होते हैं. मतलब हाफ जॉ में कितने होते हैं? मतलब अगर हम हाफ जॉ की बात करेंगे, हाफ जॉ में होते हैं इन केस ऑफ द, वहाँ पे इंसिसर होता है 2, canines 1, premolars 2, तो इसी तरह मोलर्स होते हैं 3. ये होते हैं हाफ, क्योंकि ये 2 these jaws हैं, तो 2 this means these will become the 4 halves. 4 halves will form the 2 jaws. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से and this will come equal to 32 teeth. तो and their function is also different. For example, incisors, they are called the cutting teeth. These canines, they are called the tearing teeth because they have the pointed pointed they are pointed. तो इसी तरह जो premolars and molars and they are called the grinding teeth because they help in the grinding of the
food substances. So that is regarding a little bit regarding the teeth, which type of the teeth are present in case of the human beings. Now, in this buccal cavity, there are present three pairs of the salivary glands. इस buccal cavity के अंदर तीन pairs salivary glands के होते हैं. And these are located at the different positions in this buccal cavity. मतलब there are these parotid glands, sublingual glands, submaxillary glands. You will learn about these glands in tailored manner in कमिंग क्लासेस. तो यहाँ पे इतना याद रखो, जो ये सिलेरी ग्लैंड्स थ्री पेयर्स होता है और इनकी काम क्या होता है, ये एक जूस को सिक्रीट करते हैं, उसको सेलेवा कहते हैं. इस सेलेवा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ साल्ट्स होते हैं, इसके अंदर म्यूकस होता है. बिसाइड्स इट possesses an enzyme which is called the ptyalin or salivary amylase. This ptyalin, it helps us in the digestion of the starch and the glycogen, and it converts the starch into maltose. About 30% of the carbohydrates are digested in this buccal cavity by this salivary amylase. About इसका pH अगर हम देखें, that is 6.7. About 1 to 1.5 liters of this saliva is secreted daily by the human beings, by man. So that buccal cavity, it is followed by the इसको कहते हैं pharynx. तो इसके बाद ये पोर्शन आता है pharynx. Basically, pharynx it is a funnel shaped tube about 12 centimeters in long. It helps us to propel this food from the buccal cavity into the esophagus. And this pharynx, it is followed by esophagus or food pipe. Esophagus. This esophagus, it is a muscular, narrow, long tube, about 25 centimeter long tube, and it also propels the food from the pharynx by the through the process of peristalsis. That is, this is a rhythmic contraction of its walls, contraction and relaxation of its walls, and it propels the food from the buccal cavity or this pharynx into the stomach. And then it is followed by another part of this tract of this alimentary canal, which is called the stomach. Stomach, it is a C-shaped or J-shaped sac-like, muscular sac-like structure, measuring about 30 centimeters long and some 15 centimeters in its width. तो जो ये stomach होता है, this stomach, it is situated on the left side of the abdominal cavity. In the abdomen, it is situated on the left side. This stomach, इसके बारे में हम टेल्ड में पढ़ेंगे इन द क्लास 11th में. तो यहाँ पे इतना ही आप रखना, इसकी मैन फंक्शंस क्या है. It serves 4 main functions. So far as this stomach is concerned, it serves 4 main functions. What are these 4 main functions? Number 1 जो है stomach की जो main functions हैं. Storage of food. यहाँ पे food store रहता है. Storage of food. मतलब different types of foods are stored here for different durations. अगर हम बात करेंगे carbohydrates की, they are stored for about 1 to 2 hours. And अगर हम proteins की बात करेंगे, they are stored, they remain stored in the stomach up to 3 hours. इसी तरह अगर हम बात करेंगे these fats की, fatty foods, they remain up to 3 to 6 hours. वहाँ पे स्टोर रहते हैं स्टोमक के अंदर. वो दिस हेल्प अस आल्सो इन द स्टोरेज ऑफ फूड. दिस इज देयर फर्स्ट फंक्शन. सेकंड फंक्शन, द मैकेनिकल चर्निंग ऑफ द फूड. चर्निंग ऑफ फूड. स्टोमक के अंदर चर्निंग ऑफ द फूड होती है, यानी कि यहाँ पे जो फूड होता है ड्यू टू द मस्कुलर contraction, due to the muscles, due to the contraction of the muscles of the wall of the stomach, it causes the mixing, or it causing the churning movement in the stomach, and mixes the food with the gastric juice, thereby mixing it with the gastric juice.
So this is its second function. Third में it calls partial digestion of the food. पार्शल डाइजेशन ऑफ द फूड, जो जो स्टोमक होता है इसकी लाइनिंग के ऊपर बहुत सारे गैस्ट्रिक ट्यूबुलर एंड ब्रांचेड ग्लैंड्स होते हैं, इनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो कि यहाँ पे मैंने लिखा था गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये भी एक जूस, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, उसको कहते हैं gastric glands. They secrete the gastric juice, and this gastric juice it consists of mucus। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इसके अंदर कुछ इंजाइम्स होते हैं, मतलब इसके अंदर पेप्सिन होता है वगैरह। तो जहाँ तक इस मतलब एसिड का ताल्लुक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंज द मीडियम from the alkalinity into the acidic medium। तो इसी तरह जो इसके अंदर कुछ एंजाइम मतलब ये मतलब प्रोटीन उसको पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, मतलब प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं इनटू पेप्टोन्स। तो इस तरह ये यहाँ पे स्टोमक की एक और फंक्शन है। ये गैस्ट्रिक जूस ऑलमोस्ट इसका जो पीएच होता है दैट इज 2, इट इज हाईली एसिडिक। तो इस तरह इस ऑलमोस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड डेली बाय द ह्यूमन बीइंग्स। 2 से 3 लीटर्स तक का जूस सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस। तो जो म्यूकस की फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टोमक बाय द कोरेडिंग एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इट इज देन फॉलोड। और यहाँ पे बिफोर वी विल डिस्कस ए लिटिल बिट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले हम लीवर की बात करेंगे। लीवर it is another digestive gland which is associated with our digestive system. It is another digestive gland. It is considered as the largest gland of the body, and it weighs about 1.6 kgs in an adult human being, and it constitutes almost 1/40th of the body weight, 1/40th of the body weight इसका वेट होता है। एंड इसकी जो मेन फंक्शन है जिस लेवर की, हाँ लेवर के अंदर 2 बड़े प्रोमिनेंट लोब्स होते हैं। ये जो लेवर होता है इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं ऐसे, एक बड़ा राइट लोब और लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब के अंदर एक मतलब पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, एक स्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। The gallbladder it temporarily stores the bile juice, besides it concentrates this bile juice। इसकी यही फंक्शन है। तो इस लेवर की जो मेन फंक्शन है, it secretes bile। The bile contains the bile salts। इसके अंदर bile salts होते हैं। These bile salts they do not this bile juice it do not contain any enzyme, but it contains these salts। These salts help in the emulsification of the fats। They just convert the fats into large number of fatty globules and making the action of the lipases easy। तो इस तरह इसको ये प्रोसेस ऑफ एमल्सिफिकेशन इससे होती है, इस इन बॉयल साल्ट से। तो अबाउट इसका पीएच, अगर इसकी पीएच की बात करेंगे 7.6 से लेकर 8.6 तक होता है। अबाउट 600 मिलीलीटर्स ml ऑफ दिस बॉयल जूस इज सिक्रेटेड डेली। तो दिस इज अबाउट दिस लेवर। लेवर के बाद अगर हम बात करेंगे इसकी, दिस इज लेवर, दिस इज गॉल ब्लैडर। इसी तरह ये जो है इसको पैनक्रियाज कहते हैं। It is another digestive gland। So far this pancreas is considered it is a leaf-like elongated structure। It possesses 3 parts, head, neck and tail। But इसके जो है ना, इसको mixed gland भी कहते हैं, because it consists of 2 parts, exocrine part and endocrine part। So far it is exocrine part is concerned that secretes the juice which is called the pancreatic juice। यहाँ से एक जूस निकलता है, इसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। So the endocrine part secretes the hormones like insulin, glucagon। तो उनके बारे में हम मैं आपको बताऊंगा इन द व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द हार्मोन्स और द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द मैन, वो वहाँ पे ही डिस्कस होगा। यहाँ पे हम देखेंगे जो ये पैनक्रियाट का एक्सोक्राइन पार्ट है दैट सिक्रेट्स द पैनक्रियाटिक जूस। अबाउट
इसका pH जो है that is 8.8, about 1 liter of pancreatic juice is secreted daily. इस pancreatic juice के अंदर इसमें ऑलमोस्ट हर किस्म का इंजाइम होता है, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीन्स को भी यानी कि फैट्स को भी, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स को भी, यानी कि it consists of this juice contains all types of the enzymes which digest almost all types of the foods. So this is regarding this pancreas. And then this stomach यहाँ पे it is followed by another structure or another part that is called the small intestine. So far the small intestines are concerned, it is the largest part of the alimentary canal or the digestive tube, we can say. It is highly coiled and it is situated in the stomach, in the abdominal cavity, in the lower abdominal cavity. So it इसकी length अगर हम देखेंगे it is almost 6 meters. It is 6 meters long tube. तो इस small intestine के अंदर 3 parts होते हैं. One is known as the इसको हम कहते हैं, मतलब ड्यूडिनम होता है, जेजिनम होता है, इलियम होता है. इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. लेकिन जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, जो इसकी इनर वॉल होते हैं, दैट बियर्स दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ऐसे इसके अंदर होते हैं. इनको हम कहते हैं विलाई. क्या कहते हैं? विलाई. ये जो विलाई है, दे इंक्रीज द एब्जॉर्बिटिव सरफेस of the in the small intestines, ये ताकि वहां से ज्यादा absorption of food हो जाएगी. तो apart from that, the small intestine, this serves 2 main functions. One is here the digestion of the food is completed, number 1. Number 2, यहाँ पे absorption of food भी होती है. वो यहाँ इसकी 2 मेन फंक्शंस हैं. फिर इन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं. इनको हम कहते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. वहां से भी एक जूस निकलता है, इसको कहते हैं सक्स एंटेरिकस और इंटेस्टिनल जूस. दिस जूस इट आल्सो कंटेन्स all types of the enzymes which digest all types of the foods like carbohydrates, proteins, fats. इसी तरह इसके अंदर होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स. तो इसके अंदर भी ये सब कुछ सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जूस के अंदर. तो now these small intestines, they are followed by this large intestine. Large intestine, it is about 1.5 meter long. Although इनकी length that is smaller than the small intestine, but still they are called the larger intestine. Why? Because they are wider than the small intestines. इनकी जो है ना विड्थ वो ज्यादा होती है. तो इस लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं. इसके अंदर सीकम होते हैं, इसके अंदर होते हैं जिस कोलन होता है, रेक्टम होता है, रेक्टम और सीकम. जो सीकम है उसके साथ एक स्ट्रक्चर अटैच होता है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर, वर्म लाइक cylindrical worm like structure अटैच होता है. उसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसको हम कश्मीरी में परंद्रम कहते हैं, मतलब ये परंद्रम जो बना. तो जो ये ना ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो बेसिकली इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन. इट इज ऑफ नो यूज इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. तो लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ लिम्फाइड टिश्यू होते हैं. लेकिन अगर किसी वक्त क्या होता है, इसके अंदर कोई फूड पार्टिकल होता है या कुछ कोलान के कुछ मतलब बैक्टीरिया इसके अंदर दाखिल होता है, उस वक्त इसके अंदर इन्फेक्शन होता है. इट गेट्स इन्फ्लेमेटेड, इट बिकम्स, इसकी इन्फ्लेमेशन होती है, इसकी स्वेलिंग होती है. दैट कंडीशन इज नोन एज एपेंडिसाइटिस. तो ये एपेंडिसाइटिस उस वक्त इसको जरूरी, इट नीड्स टू बी रिमूव्ड सर्जिकली इमीडिएटली, क्योंकि अगर ये यहाँ पे बर्स्ट हो जाएगा, इट विल सेपरेट द इन्फेक्शन इनटू द होल बॉडी. तो इसको इस वक्त जिसको एपेंडिक्टोमी कहते हैं, इसकी सर्जरी, इसकी रिमूवल को. तो इस लार्जर इंटेस्टाइन की एक मेन फंक्शन ये है कि एक तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है. वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती थी, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे. यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ द undigested, that is undigested food, that is fecal matter is
फॉर्मड यहाँ पे ये भी बनता है, स्टोर भी रहता है, वो बनता भी है, और फिर इसकी एलिमिनेशन भी होती है. इट सर्व्स दीज टू मैन फंक्शंस. एंड अल्टीमेटली द अनडाइजेस्टेड फूड that is adjusted out via the anus. So this was regarding the digestive system of the human beings. So ultimately, if we will talk about the digestion of the food in case of the human or the what are the various steps which are involved in the nutrition of the food. तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 स्टेप्स आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन. तो अल्टीमेटली इजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन के बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक. तो आज तो यहाँ पे इतना ही हम डिस्कस करेंगे. तो अल्टीमेटली जो ये फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर अल्टीमेटली डाइजेस्टेड बाय दीज एंजाइम्स इनटू ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, तो एंड सक्रोज. तो जो ये होता है, इसी तरह अगर हम बात करेंगे, प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड अल्टीमेटली इनटू एमाइनो एसिड्स बाय द प्रोटीएसेस. इसी तरह फैट्स आर डाइजेस्टेड बाय द लाइपेसेस इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल. एंड द न्यूक्लिक एसिड्स आर अल्टीमेटली डाइजेस्टेड into the bases, into the and the pentose into the sugar and inorganic phosphorus. This is all regarding this is all about the digestive, about the nutrition in human beings. For today, inshallah, in the next topic we will proceed ahead. Till then, fi amanillah.